A very good morning to one and all present here. On the day one of our training program, Commercial Floriculture, Sunrise Industry Management and Linkage Studies under AMDP, sponsored by MSME. I'm Rahna and it's our pleasure to have the chance to welcome all of you here for this event at Squash, Kashmir. Now, I take the pleasure to invite the head and professor of Department of Floriculture, Dr. Imtiaz sir, to formally welcome the gathering. A very good morning, Adab, Sat Sri Akal. This is a very great day today. Beautiful autumn morning. On this day we have gathered here and we are welcoming our Honorable Vice Chancellor, Professor Nazir Ahmad Sahab, who in spite of his very busy schedule has thought it proper to join us this morning on this occasion for inauguration of 1 week MDP program sponsored by Ministry of Micro, Small and Medium Industries. Honorable Vice Chancellor has been the guiding force behind the SCOSK's endeavor to train our entrepreneurs, our farmers, our nurserymen, our livestock men, and all those who are associated with agriculture, horticulture, animal husbandry, floriculture, etc. I also take this opportunity to welcome Professor Harun Sahab, Director Research and also Director Planning, who has been the main linchpin in promoting SCOSK as the major institution in India, who are having the maximum number of these trainings from Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. And not only we are beating IITs, but also with the other universities in India in getting these programs, and Professor Harun Sahab has been the main proponent or guiding force in pushing the scientists to write these programs and submit it to the ministry, and we have got maximum number in the country. Before I go further, I please I also take this opportunity to welcome Mr. Devendra Kumar, who is the reward passport officer of Jammu and Kashmir. He is not here because he is a passport officer, but because he has been very closely associated with agriculture. He has a decade-long experience in the Ministry of Agriculture, and he also, as we were talking to him, runs an FPO, and he thought it proper to join us this morning. You are welcome, sir. I take this opportunity to welcome Director SID, Dr. M.K. Verma, who joined us this morning. He makes it a point to join us in various programs in SCOSK, and under his leadership in SID, SCOSK and SID, they have developed very close relations and very fruitful relations, and we are on the number of programs we are having together. We welcome you, sir. I also welcome Professor Nilofer,
who is a eminent floriculturist herself, and right now she is the Dean Students Welfare Officer. And I welcome you, ma'am, to this program. I also welcome the participants who have come from different parts of Jammu and Kashmir. They will be given an opportunity to introduce themselves to dignitaries here. Last but not the least, I welcome Dr. Bala Shiva Prasad, who has come from all the way from southern part of the country to the northernmost part of the country. And we welcome you, sir. Dr. Bala is a keen horticulturist. He is on the board of National Horticultural Board, MIDH, and he is the president of Commercial Floriculture Association, and he runs many FPOs. He is very closely associated with promotion of horticulture and particularly floriculture in and around Bangalore, in Tamil Nadu, Kerala, in Andhra, in Telangana, and also in the north. He is the driving force of many commercial ventures. He is also himself an industrialist, and he is the driving force of many commercial ventures that are going on in Tamil Nadu, in Karnataka, and southern states. And he is the main person or go-to person in south of India whenever there are some problems or something to be done with the field of horticulture or floriculture. We welcome you here, sir. I also welcome a very special guest who has joined us this morning. I telephoned him yesterday and he agreed to join us. He left his other assignments. Let's together welcome the bicycle man of India, Mr. Neeraj Prajapati. Mr. Neeraj Prajapati has traveled almost 1.25 lakh kilometers all across India. He has been to Kashmir many times, and he came to our university a few days back, visited our chrysanthemum garden here, and he is on a tour of 10 districts of Kashmir, this time promoting our holistic agricultural development project, the flagship program of Jammu and Kashmir in agriculture, which was envisioned by our Honorable Vice Chancellor and which is under implementation all across Jammu and Kashmir. He is also, Honorable Vice Chancellor has also assigned him the work to promote our niche crops like Ambri, like Mushku Bhuji, our saffron, our Kala Zira, and many more other niche crops and items that are endemic to our region, and he is doing that with all his might, sir. He is already posting on his, because he has a very huge social media outreach, and he has a lot of fan following and a lot of followers on social media, and he is doing his job and promoting Kashmir like anything, and particularly agricultural products. And he visits the agricultural institutions all over India, KVKs, ICR institutes, then universities also. So he's the right man to have with us this morning. We welcome you, Neeraj. Thank you very much for coming. Without taking any further time, I request Rahana to come back. Will you announce this? Okay, you'll announce this. Come. Thank you, sir, for the earnest welcome address. Now, I would like to invite Professor Harun R. Naik, sir, Director Planning, Monitoring and Nodal Officer, MSME. Welcome, sir.
Honorable Vice Chancellor Professor Lizzie Nagar sir, a leader of this university who has been always instrumental in promoting the entrepreneurship, in promoting the startups. A very interesting person, Mr. Devendra Kumar, the passport officer, despite having a different activity of issuing passports, he loves the agriculture and is always involved with the agricultural activities. Dr. N.K. Verma, Director SIP, our sister institute, who has been always instrumental in promoting the horticulture activities and has got a good name of the SIP. We have been always working collectively together. Dr. Bala Shiva Prasad, Shiv Shakti Floriculture, who has come all the way from Bangalore, dealing with the horticultural activities as Dr. Linkage was just mentioning. And he will be here with us for another 2 days. And training you people. Growing, everybody knows growing how to grow the flowers, but he will be focusing on how to, if somebody comes in a business, how to market the produce. Because ultimately it is the market which makes the business activity interesting. We have here been students of Professor Nilofer, Dr. Imtiaz, HOD of the Floriculture Department, faculty, course coordinator, Dr. Nasir Masoodi. Last year also he conducted a program that was very successful out of all the programs. I congratulate him for conducting this program and then focusing more on training with the industrial partners. Now the journey of this MSME started with the SCOST in 2022. We started with 66 training programs, and that year trained some 1,600 people to establish their businesses. Then in 2023, this university successfully conducted 550 short skill programs under MSME. And it's not so easy that around 26,000 people were skilled in the year 2023-24. And this year we have 495 short skill programs in different sectors of agriculture and allied activities. And hopefully by Monday or Tuesday, another 250 programs will be released by MSME in favor of the SCOST, deducting all those activities from all NITs and IITs. You begin to categorize. So, अंग्रेजी सबको समझ आती है कि नहीं? ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि 2024 में हमें अभी तक 495 प्रोग्राम जो है वो हमें इम्प्लीमेंट करने हैं शॉर्ट स्किल, और सोमवार या मंगलवार तक 250 प्रोग्राम और आने वाले हैं। वो प्रोग्राम वो है जो IITs और NITs से काट दिए गए हैं, क्योंकि पिछले 3 साल की रिपोर्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME के पास है, तो उन्होंने देखा कि SCOST ने कैसा काम किया, कितने बिजनेस एस्टेब्लिश किए, कितने लोगों को स्किल किया, उसकी वजह से हमें मिला। और सेकंड थिंग इज कि अब उनको समझ आ गया कि भाई अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया में फुल फ्लेजेड आना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा
एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ में ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल पूरे इंडिया में अवेलेबल है और 70% पॉपुलेशन इसके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। अब जो ट्रेनिंग आज की है फ्लोरिकल्चर में कल वैसे ही सर्चिंग 2022 का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, किसी ने ग्रेटर कश्मीर में दिया था कि उस वक्त की फ्लोरिकल्चर का क्या स्कोप है। मैं हैरान हुआ ये पढ़ के कि 90% जो फ्लावर्स हैं जो कश्मीर में यूज़ किए जाते हैं वो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, और हम खाली 10% अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं जो यूज़ होता है यहाँ पर। कीपिंग हमारा जो क्लाइमेट है, हमारी जो ज़मीन है, मुझे याद है आज से 40 साल पहले मुझे एक बुजुर्ग पंडित जी मिले जम्मू में, तो मैंने बोला कि अब आप यहाँ रहते हो? बोला हाँ। मैंने कहा कश्मीर, उन्होंने पूछा कश्मीर में और जम्मू में क्या फ़र्क है? उन्होंने बोला कश्मीरी में कि कश्मीर में अगर कुछ लोर के लागो तक फल न्यारा, ये अगर असल के लागो तक न्यारा की है। तो वी हैव ए वेरी गुड लैंड, मतलब हमारा क्लाइमेट अच्छा है फ्लोरिकल्चर के लिए। और मुझे लगता है कि यहाँ जो स्कोप फ्लोरिकल्चर में है, चाहे वो सीड है, बल्ब्स हैं, ड्राइड फ्लावर्स हैं, कलरिंग एजेंट्स, एरोमा के लिए जो है, हालांकि एरोमा मिशन भी आया उसके अंदर लेकिन मुझे इतना सक्सेस नहीं लगा। उसके बाद कॉस्मेटिक्स जो इसी से हम डेवलप कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स, पाउडर्स। तो फ्लोरिकल्चर एक वास्ट इंडस्ट्री है, ये खाली फूल उगाना ही नहीं है। अभी चूँकि मैं अंग्रेजी में फिर करूँगा क्योंकि डॉक्टर बाला इज हियर, ही मे नॉट अंडरस्टैंड द हिंदी। यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी? ओके। डॉक्टर बाला को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप यहाँ ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, I being the nodal officer of the MSME, that it's not only that 7 days we will give them the training, and after that they will take a certificate and go to home. If this is a group of 30 people, at least I expect 5 to 10 people should come out and open their own businesses. Some of them are here who are already having the business, but maybe having some marketing problems. So I hope डॉक्टर बाला आप उनको हेल्प करोगे, मार्केटिंग जो प्रोड्यूस का होगा उसकी मार्केटिंग के लिए, और जो नए बिजनेस में आना चाहते हैं तो आप उनको बोलोगे कि वो किस में आए, ताकि लेकिन उनको कोई मार्केटिंग की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आई होप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 7 दिन में तो कोई इतना एक्सपर्ट तो नहीं बन जाएगा कि मैं बोलूँगा कि वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट, लेकिन उसको एक आइडिया मिल जाना चाहिए कि अगर मैं इस बिज़नेस में आऊँ तो फ़ायदा क्या है। और अगर आपको मार्केट मिलता है तो मैं उम्मीद करूँगा कि जो नए जो यहाँ पे इस्टेब्लिश जिनकी ऑलरेडी चल रही है वो अपना मार्केट के लिए बात करें यहाँ पर, और जो नए आने चाहते हैं तो वो डॉक्टर बाला और जो दूसरे लोग आपको आएंगे और भी कंटैक्ट में रहिए। और अभी हमारे पास जो नौकरियां हैं, चपरासी बनने, क्लर्क, डेलीगेटर, उससे लाख दर बेहतर है। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास क्लाइमेट है, उसका फ़ायदा लेके हम यहाँ से, मैं चाहता हूँ कि कश्मीर से फूल जाए बाहर से फूल यहाँ नहीं आने चाहिए। तो दैट इज अ चीज। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Now, I would like to invite Mr. Balashiva Prasad for the lead deliberation. Before that, let me give a brief introduction about sir. He is a member, Director of National Horticultural Board, EPEDA, MIDH, President of Hosur Farmers Association, Director, and he is a Director of Flower Council of India, flower grower and exporter since 2007,
Mr. Bala has completed his BSc MCA Master's degree in 2006 and started his career as a system engineer in a private company. Due to his interest, he has started his horticulture career in floriculture. Started Hosur Small Farmers Association in 2012. He has trained more than 6,000 students and farmers, and his vision is to make India as World Horticulture Hub. Welcome, sir. Thank you, madam. Thank you, sir. So, generally, whenever I go to a presentation or seminar, I don't want to waste members' time and all. As a National Agriculture University, I provide my thanks to our Vice Chancellor, sir, and giving me this opportunity to explore our floriculture industry along with my peoples. I feel very happy to be here. And, so that directly we will get into the subject, sir. Thank you very much. So we can say floriculture. It's a part of first agriculture, in that part of horticulture, in that floriculture. So why we are describing of flowers? Flowers is the only tool, powerful tool in the world, which can avoid wars, which can express love, affection, care without any words. We can communicate. Thank you. We can communicate with each other, even though without knowing language. With the flowers, we can express our feeling. If I go to Japan, I don't know Japanese language, but I can communicate my intention to them by giving a flowers. Each and every flower having unique characteristics, and they're having a meaning. For example, in roses, we can say white rose for peace, pink rose for mother's love, yellow rose for friendship, red rose for love. Like that, we have different meanings of the flowers. So generally, we used to call, we can express our feelings without words. Communication between the hearts, it's a symbol of love, affection, care. It's a powerful weapon in the world. You can notice in many places, even though they are having a hot arguments, at the end they will give some flowers, they will take some flowers to close that arguments and other things. So flower plays very important role. In the Indian floriculture, we can say we have approximately the usage. I will come to the usage part. In India, generally, we classify the flowers into loose flowers and cut flowers. So, under cut flowers, normally we used to grow Dutch roses, gerbera, carnation, chrysanthemum, orchids, lily, eastoma. These are the major floriculture crops we used to grow. And in loose flowers, spray roses, small spray roses, jasmine, loose chrysanthemum, tube roses, marigold, corsanda, escort. These are the flowers we generally used to grow. So Indian floriculture market is a very big market. Still it is in an unorganized structure. Approximately 40,000 crore rupees of business is happening inside India per year in floriculture alone. 40,000 crores. It's a very big value. In that also, in India, for example, if you consider that approximately 12 lakh active temples which are carrying daily activities, their puja and other activities, they will consume at least 2 to 5 kgs of flowers per day, loose flowers, chrysanthemum, marigold, other types of all the flowers they are consuming. So the demand of loose flowers and cut flowers is always good in Indian market. Actually, when we are discussing about that, floriculture marketing is the issue. Whatever we produce, marketing at the end of the time when we are selling, that time we are facing the issue. So farmers are not getting proper values for the produce. This is the basic problem in entire India. Not only in Jammu Kashmir, it is also in Tamil Nadu, Andhra, Karnataka. Everywhere the issue is there. I can give you one my story how I became an exporter. The thing is, I started 2007 floriculture. Initially, I started with 1 hectare of polyhouse, greenhouse polyhouse. I think you know that. In that, I grow for Valentine's Day is the very important day for us, for rose growers. That time only we will get the maximum profits. Single rose we can sell, depends on the market, 25 to 30 rupees per stick of roses. When I grown first time, I harvested 1.5 lakh flowers in my farm, and I sold the flowers in Bengaluru market. I earned 3 lakhs rupees, just 3 lakhs.
The next year, 2008, the same flower I used to send Hyderabad, Delhi, these markets, I earned 7 lakhs. The third year, the same quantity of flowers, 1.5 lakh flowers I grow and I send it to Singapore, Malaysia, Dubai, where my margin crossed 30 lakhs. 30 lakhs. That is the basic thing. When we are producing our product, flowers, we need to know where we are going to market it, how we are going to market it. That is very important thing. If you reach the perfect market and the destination perfectly, floriculture is like a printing machine. If we have a printing machine in our home, we can sit and print money for us. Like that only floriculture, we can sit and print money in floriculture business. For that, we need to understand and learn the marketing. We can say Netherlands, the country is major contribution is floriculture only. Based on the flowers only, they are doing their GDP. Without flowers, the GDP is nothing. So that much of potential is there in the floriculture industry. Around in India, we can say approximately, that is the minimum figure I am saying, that 5 crore people are involved directly and indirectly in floriculture industry. I wish to say one more thing. 1 acre of polyhouse growing flowers will give employment opportunity in the farm level for 10 to 12 members in farm level. In floriculture, roses, herba carnation, every day there will be a farm activities will be there. So for that we need a manpower, employment creation, that too particularly in the rural India. If you come to our Bangalore region, maximum we employ 5 acres from 35 to 40 members. Daily wages, daily we will give the job opportunity to them. Like that, farmers, employees, packing workers, transporters, input suppliers, transporting material manufacturers, this is growing side. After that, when it reaches the market, wholesalers, retailers, decorations, event managers, there is one set of cycle is there. Like that, if you say minimum of 5 crore people in India involved in floriculture activities, their livelihood depends on the flowers. Simply we can say, if you can visit South Indian flower markets, they have a table size of 5 feet by 5 feet, maximum size 5 feet by 5 feet. They will come early morning 4 o'clock, they will shut down their shop by 8 o'clock, morning 8, they will close and they will go to home. Next day morning he will come 4 o'clock, that's it is work. And an average of daily income you can make 10 to 12,000 rupees easily in a normal times. In demand times, that is the Muhurta times and the festival seasons, you will make 20 to 25,000 with that place of 5 by 5 size. That is the potential of flowers. So floriculture is a very good concept. We need to learn and we need to practically implement it. So in India we can say any function from birth to death, you can check any function, birth to death or any functions, without flowers we can't see a single event. So in our meeting hall also we have a beautiful arrangement of flowers which is grown in university itself. Yesterday evening I visited. It's very nicely grown. So small meetings from university functions, governor meetings, CM office, PM office in Delhi, everywhere. Throughout the India, flower consumptions will be there. So India is a very big and high potential market. Previously in 2008, 9, 10, that time consumption and usage of fresh flowers in India is a little bit slow. Now it become very high consumption. In other days, export is a very big market for us. Now also export is a good market, but domestic consumption become very high. So we need to utilize that opportunities. Other usages like industry usages, fragrance, natural colors, medicines, Ayurveda, edible flowers, these are the recent trends which is growing on. I can say AVT Thomas, there is a company in Kerala border, Tamil Nadu Kerala border. They used to buy marigold for the fixed price of 10 to 12 rupees per kg, depends on the seasons. There are seasons like Ramzan month market, flower market will be done, Easter month flower market will be done, Ashada month market will be done. These are 3 months we will face little bit complications during a flower seasons. So that time marigold flower prices as much as down 5 rupees per kg, 8 rupees per kg, like that market will slow down. That time they used to come to market, they will buy the flowers, marigold. They will buy and they will extract the color pigments. From marigold they will extract the colors and they will make it as a eligible and tablets coloring, food coloring, what are the required things, these and all they will make. There is a separate company for this. When jasmine prices, we can say the price touch as much low as 50 rupees and also it touch as the peak of 6,000, 5,000 rupees per kg during peak seasons. So when it touched to 50, 100 rupees, that time
in Tamil Nadu, Nelakote Digital District nearby Kodaikanal, they have a factory. They will extract the jasmine essence and they will make it as a perfume. They will start exporting to different countries, especially Middle East. They will send. So like that, during off season also we have different types of business. During season we have different types of business. So we need to get communication with them, different market peoples, different byproducts people, value addition peoples. We need to send our flowers to everyone. That will make good results and good returns to the farmers. I can say one more example from Hosur. I am growing in Hosur, Tamil Nadu. We can say Delhi is the year-round market. Delhi is the capital city. Every day there will be a function, there will be a hotels, resorts, lot of things is happening 24 hours, 365 days. So Delhi market will be a good market for every floriculture person. So market will be good. In Delhi also during off seasons market slowdown will happen. That is an unexpected market. Apart from that, if you say Onam festival in Kerala, where the Kerala people used to fresh flowers, the festival of flowers. Onam is nothing like festival of flowers. Like that, they will use maximum fresh flowers in the Onam festival. In Calcutta, Kalimata festival, they will use maximum flowers. Wedding seasons. In weddings also in India, we can say we have approximately 75 dates, wedding dates, peak wedding dates. In that also, Amavasya, Paurnami calculations will be there. Before Amavasya, after Amavasya periods. So in that, after Amavasya will be the peak dates. That time we can touch the prices of per stick 20 rupees, 25 rupees, roses, zerbera, carnation, and all 5 rupees, 10 rupees, 8 rupees like that. So these are the 75 days are important dates in domestic market. So we need to plan growing based on the dates. We have a floriculture calendar, we will calculate. For example, rose growing period is 45 days. If we prune the stem, next 45 days I can able to harvest the flowers. So we will calculate. Valentine's Day is February 14th, so I need flowers on February 10th. So February 10th I want to flowers means I has to cut February 4th or 5th harvesting. For 4th or 5th harvesting, I has to do the pruning in December 15th or 16th. If I do my groundwork on December 15th or 16th, I will get very good quality flowers during Valentine's Day. My prices will be very high. I can able to make good money in that. Like that, everything is a calculating process. Just like that, we can't go planting and harvest the flowers and wait for a buyers, wait for a market. That is not the scenario. We should have a floriculture calendar with us. We know when the market demand is high. That time our flowers should be in the production. So planning is very important in floriculture. I told that. Also, when Kerala market is good, I used to shift my flowers to Kerala. When Andhra market is good, I used to shift my flowers to Andhra. When Calcutta is good, I used to shift Calcutta. So different months having different inputs. The demand will be changed. Throughout the India, single time demand will come, that is Valentine's Day, Mother's Day, Women's Day, Diwali, Ganesha festivals like that. Apart from that, depends on the dates, depends on the market, it will change. So we should have communication and contact with throughout the pan India. We will get a good prices for our produce. So when we discuss about important dates, Valentine's Day, Mother's Day, Christmas, New Year, these are the important days. 70% of the floriculture business in worldwide happening in these big days, especially Valentine's Day. I will tell about the Valentine's Day speciality. If Valentine's Day comes on Friday and Sunday, market will be slow. Yeah. Sunday is the holiday, parents won't allow the children to outside. So market will be slow. Normally we used to pray Sunday don't come, Valentine's Day don't come. And Friday Middle East market will be holiday. So that is the reason. When it comes to Friday and Sunday, market will be slow. We always wait. But then if we have some technology to sell those flowers to those guys, then boy, we do bulk emailing, bulk messaging, isn't it? So we should data all those young boys. That will come to the data and send you to the home. Nice. It is the trend over there. Wonderful. Friday and Sunday, if it come on Friday and Sunday, market will be slow. The prices of flowers will fall down around 30 to 40%. 1 year before, we should know when the Valentine's Day. Yeah, we will plan accordingly, sir. We have the calendars, we will plan accordingly. So this is called what's called as market intelligence.
Market intelligence. ठीक है आगे. Every year, along with Valentine's Day, Chinese New Year will come. That will be in between January 20th to February 20th. In between that 1 month, they will celebrate 10 to 12 days Chinese New Year. It is not a single day. They will keep on one events they will celebrate. That also, if that Chinese New Year comes to very near to Valentine's Day, we will not get flowers. That much of demand will be there. Globally, the demand Chinese people population is very high. They are mostly occupied Southeast Asian countries everywhere. We can propagate to the people that we must celebrate Valentine's Day broadly. Yeah, it's going on, sir. They will make it as a chocolate day, rose day, teddy day, hug day, like that they make it, sir. Good. It's going on. The main day is rose day. We will give red roses. So in that also recently red rose cost 50 rupees. For example, I will say red roses we used to send 50 rupees. Every year I will get at least 50 to 100 calls. I need a black rose to break up. It's going on. Friendly. They used to keep on calling, especially from different countries, Singapore, Malaysia. They used to call, sir, do whatever. I'm ready to pay. You have said Europe would be a better market for breaking. Because the divorces are very high in Europe. So black roses, purposefully they want black roses, but we are not growing black roses. What we used to do, we will harvest the pure white rose, milky white rose, like avalanche white and iceberg white, and we will dip into food coloring agents, black color, and we will convert into black rose and we will send. Good. If you do spray on it, it will be visible. Visible, they can touch and feel it. Yeah. But if you do with the food coloring into intake, and naturally it will convert it. Yeah. Very nice. We used to do. Do we have some black roses here? There's a black rose in the world. Yeah, it is there, sir, but not commercially grown. Black rose is there, not commercially grown. So do you have some black rose trees we could have it one place? I will check, sir. Actually, I think we are having in ICR campus. Dr. Market, I think we can consult and he may be resource person for us. More Because than for the university, for these guys, we must have black rose. so. Chalo, So, like that important days, it play a very important role. So, Valentine's Day calculation I told, like that, when it comes to Friendship Day, yellow roses demand will be very high. Yellow. Yellow. When it comes to Mother's Day, pink roses price will be skyrocketing. I can say in 2011, 12 I think so. In that time, that nursery person are not able to sell his pink color plants. So finally, he pushed all the 40,000 plants to me. So I planted. Luckily, what happened that year, Dr. Madam Jayalalitha, Tamil Nadu ex-chief minister, she passed away. Her birthday came. I sell one rose for 45 rupees. The total project cost I recovered in a single day itself. I have a very big production, around 2 lakh stems I have left over. When it comes to that celebrate this special day, Mother's Day, every party worker bought roses from us. Listen, for they had HOD, there has to be some chapters or some course about marketing and market statistics. Unless we don't know it, so we don't know, we can't just हम अपने लोगों को कैसे बता सकते हैं कब कौन सा फ्लावर कब फूटा कैसे बनेगा. So इसके लिए you करेगा. Together you will develop that course. Sir, Hey, listen, is it in our syllabus, does it teach that which flower should we cultivate there? Or what special day this flower, what color is it? वो पुरानी बात होगी, हम नया ये है कि अगला एक कोर्स बना दो, बाद में बोल रहा हूँ. Design a course for the students, while we talk about market strategy, और उसमें ये होना चाहिए, these are all the special days. And then on every special day, what kind of a flower you would like to look into on that particular day, what color that works. yes, sir. And then, if we go back, so we would be knowing in advance when should we start cultivating that particular flower. Yes, sir. And when should we do all the kind of operations. Yes, sir. Because a common man will stick there in the And when we teach the flower students, बच्चे लोग हमारे तो कल करते नहीं ये काम.
उनको मास्टर बनना है. So we have to just do it for those guys. हमें उनके लिए काम करना है जो यहाँ पे इसमें business करते हैं. So you should be part of, and I believe that it should take you not more than 1 month's time to design that whole course. उसके बाद उस particular festival कहाँ मनाएगा? We have to also know it in advance. And where is more demand? So, yes. Sir, actually I requested ICR to set up a MBA program, 2 years full-time program for international agri-commodity marketing intelligence. I requested क्या बोला आपने? 2 years full-time MBA program Into agri. for agriculture, international agriculture business. So we have a lot of products in India which is not able to market globally. Only few private people making it a business, export business. It should be open up for everyone. So every year flower consumption is increasing by 7%. In India it is 6%. Globally it's 7%, India is 6%. We are very close to that. We are very close to the worldwide trend. Our population is, now we are touching around 150 crores. The demand is very high. The celebrating of flowers. In previous, I can say in 2010, if I'm staying in Bangalore, I want to gift a flower bouquet to the person who is staying in Delhi. It is a very complicated process. I should know common friends, I should have access to the markets, then I have to send one person. It will be a difficult task. But now it is not like that. Over a touch, the flowers will be delivered. In that also, they give multiple options. But 2 o'clock, if you want to go and make up, they will go and make up on 2 o'clock. Like that, multiple options they are available. Ferns and petals, interflora. I can communicate with you the required people's, business people's into our farmers and all. So you can make direct deal with them. These are just hold. ये जो इसलिए नहीं कि मतलब आज यहाँ पे हो रहा है, आपका जो मॉडल ऑफ एजुकेशन है, यूनिवर्सिटीज मॉडल ऑफ एजुकेशन, उसमें लिखा हुआ है पहले से कि when we design our curriculum we take the feedback from all the stakeholders. It could be students, it could be farmers, it could be industry, it could be the consumer. अरे उसमें लिखा है consumer. तो यहाँ पे इंडस्ट्री और कंज्यूमर का जो है फीडबैक होगा. कंज्यूमर मीन्स जो फेस्टिवल्स पे लोग जो उनको चाहिए, उनको कब चाहिए, एंड इंडस्ट्री पीपल टेल अस हाउ टू डू इट. तो आज की इस मीटिंग का ये प्रोग्राम होगा, बाकी आप करते रहो. आई शुड गेट इट इन, आज की डेट है 11 तारीख, 9 है ना. So by the end of this month, I should have on my table complete syllabus along with the tutorials for everything. Not only writing the syllabus, name, this. Work with them and there will be some other guys. Because अगर हमने इसको छोड़ दिया तो अगले साल तक आप भूल जाओगे, तो अगले साल कोई नहीं बोलने वाला. So it should happen this year only. And it should be a special course taught to the students in management and with floriculture. the basic thing is we need to understand the flower market. Maximum flower markets opens at early morning. In Bangalore 3 a.m. like that they will open the market. When we are selling our flowers on 3 a.m. I can fetch, for example, I will take example of roses, Dutch roses. If I sell 3 to 4 a.m. I can get 100 rupees, for example, 100 rupees the flower. If I sell the same flower 6 a.m. I may get 30 to 40 rupees only. That is the market. If jasmine is sold by 4 a.m. in a Coimbatore market, then all the exporters will come by 4 a.m. They will grade the premium quality. They will take premium quality for the price of 1,500 rupees. The same jasmine at 8 a.m. only sold for 150 to 200 rupees. There will be a very big gap between these things. The timing is very important. As for flowers, quality is the very important factor. With the quality, we can sell our produce anywhere, anytime, with the premium prices. In cut flower, in loose flowers, timing is very important thing. They have very less shelf life, hardly 1 day. So they need to reach the markets, reach the customer within a day. Harvesting, wholesale market, value addition, end customer, everything happens in a single day. So that flowers, we need to reach market timely. So market access is the very important ingredient from the farmer side. They need to know when to harvest, what is the mode of transport, where we are going to send, what is the packing methods. These are the very important things we need to learn and explore it.
So international demand is good always for good quality flowers. Quality only speaks the price, quality only give the demand. Without quality we can't survive in the floriculture industry. Whenever we are growing, we should grow quality flowers. It has a good shelf life, brightness, color, size, shape, opening. These are the key factors. The recent trends, that is in weddings, we can say in weddings, the boy and girl, which color dress they are wearing, based on that theme decorations will be there in background and surroundings. The garments which they used to wear, that also based on the saree and the suit what he is wearing. Based on the designs have changed, the color trends have changed. So we need to keep update our profile group, growing, trading, exporting, all we need to keep on update. Then we can easily survive. If we are outdated in market, daily we need to keep on updates. If we are not getting the updates, we will be out from the market. Even though we are sitting in Huzur, daily morning we used to know what is the price in Delhi, Hyderabad, Singapore, Malaysia, Dubai, every prices we used to get before 10 a.m. What is the price going on there, how the trend is going on. We will keep on updating ourselves. That is very important factor in floriculture. So quality and timely delivery plays important role in flower trade. But one thing, little I will just forget, because you have the pools here Yes, in that part of the country. yes, And then it is, you plan it such a way that you go to the market early in the morning at 3 o'clock and there would be buyers, exporters who actually bring in quality flowers and then send it first and export. yes. Should reach much for time. But how could it happen here in Kashmir? So, just think what is that? I will tell you one example. Madurai jasmine is the famous thing. Throughout the worldwide, Madurai jasmine. We grow jasmine in many parts of the country and foreign countries also. But the fragrance and the brightness of the jasmine like Madurai, nowhere in the world. They have a geotag also for that. So when I am sending my shipment to different countries, I used my Bangalore airport, which is nearer airport to me. My flowers get ready by 2 p.m. I need a jasmine also. I need a medium also, which is grown in Salem district. From there, they will send their airports to Bangalore airport. Madurai airport to Bangalore airport they will send. In Bangalore, I added my flowers, roses, other things and all I added, clubbed together. And volumetric plays a very important role in air cargo charges. Up to 100 kgs, up to 300 kgs, up to 500 kgs, more than 1 ton. I have decided the prices. For example, I can say if you are sending flowers to Malaysia, up to 100 kgs they will charge 180 200 rupees per kg. Up to 300 kgs means 120 to 130 rupees, 300 to 500, they will charge another 10 rupees less. If you are crossing the quantity volume more than 1 ton, you will get 85 to 90 rupees. If you are sending more quantity, you will get 85 to 90 rupees. If you are sending less quantity, you will charge double the rate. So it will decide the prices in a destination. And then, there has to be connections with the exporters. Yes, sir. For example, from Srinagar airport, maybe we ship it through air. It will reach to some direct flight to Madurai or to Bangalore or to any other place. Delhi. But then, to Delhi, so therefore, our growers should also have the information and the connections with the exporters. Yes, sir. Cargo It has to be predefined. predefined, sir. Cargo agents are there. They know the flight timings, cargo shipment details. They have the facilities of So storage. the And exporter is basically the buyer. Yes, sir. Guys are there. They will ship it to the Delhi, Yeah. but then next the person to whom we are sending it. yes, sir. So again, it has to be part of it. Yes, sir. So one more advantage in what we are having is, since we are having a population of 150 crore, our people spread worldwide, everywhere. Majority countries are Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Middle East, Canada, and Europe countries and all, our people are there. Wherever our people travel, they will carry our culture, usage of fresh flowers, they will carry our traditional values over there. Whenever the functions comes in India, same time they will also celebrate functions over there. That time the demand of flowers will be high. They will also import more flowers. When Onam comes, Dubai market, regularly they are taking 1 ton means in a Onam festival they used to take 3 tons. The celebration will be high. When Diwali comes, the usage of high. Ganesha festival comes, usage will be high. Like that, they are also using maximum flowers. Our Indian peoples, wherever go, they carry our culture and traditional values. They will use our fresh flowers. As of now, we are doing fresh flowers into value-added products also. Instead of sending roses as it is, we used to prepare garlands, strings,
these high demandable products. For example, labor cost of person who can make garlands in Dubai, it will cost more. The same garland can be made in India for 500 rupees or 600 rupees. So here we will make that garlands and we will pack with the thermocol box with the liquid ice, gel sheets. There is a packing standards based on that our Tamil Nadu industry developed and produced it for us. So in that packing up to 3 days, 4 days, the freshness of the flowers will be remain same. Using that methods we are sending. Value added products also we are sending. It will give more returns. By sending value added products, the returns will be very high. So, Sir, one question, sir. yes. We are witnessing for the last few years the trend of plastic flowers. Yes, sir. Because they look like that. सर यहाँ पे कि हमें Yeah, Chinese. चाइनीज फ्लावर्स है, हमें अपने फार्म से जो फ्लावर्स निकलते थे पहले शादियों के लिए तो आज किया और इससे बहुत सारे Yeah. people who are engaged with this for decoration That's a challenge. they have went up like that. Yeah. So how do you Yes, sir. I will explain about it. The flower, artificial flowers movement started in 2016 by myself in Tamil Nadu. After that, we started. We distributed 10 lakh flowers free of cost. I distributed 10 lakh flowers free of cost to create awareness. Then after that, we started in Bengaluru. Then came to Delhi. Last week in Mumbai, we are doing that. From Flower Council of India, we filed a petition in Bombay High Court. Bombay High Court directed to Government of India what to do in this. So we explained that impacts of artificial flowers in our environment cycle. Per year, around 350 metric tons of artificial flower wastage entering into our water bodies. That water body again, it will come into our food cycle like fish, animals, fodder, the same water used for growing vegetables. Again, it is completely affecting our food cycle. In India, 98% of the flowers imported from China, other 2% from different places. In artificial also in our code, they mentioned 70016 like that. Some codes they specified, they included artificial flowers as some gaming toys. There is some logical reasons they included in that. So Government of India, Ministry of Commerce working on it, how to eliminate. Directly we can't stop the artificial flowers since the trade agreement between two countries. So as per our request, they increased 30% of taxation for the import of artificial and decorative items. Still we are requesting 100% hike of these flowers. For example, zebra artificial flower cost is 5 rupees. It can be used to minimum 10 to 12 times. Once they can use in this function, like this 12 functions, they can use the same flowers. So 12 into 5, we can say around 70 rupees, 60 rupees, which has to come to our farmer pocket, has been stopped. So it's a very serious threat and issue. As of now, Kerala having 60 to 65% of using of artificial flowers, and West Bengal, Tamil Nadu, Maharashtra, these are the highest states using artificial flowers. Andhra Pradesh and Telangana using less artificial flowers. And northeastern states are using little bit less. So we are working on cases files. it's a very big threat to Very big threat, sir. It is really a big step. And in artificial flower import also they are doing that. They are undervalued they import some fabrics. fabric. Undervalued also. They import, for example, I can say Government of India is saying that from China we are importing 1000 metric tons of artificial flowers. Government of China saying we exported 2000 metric tons of artificial flowers, this material to India. And US Academy of Plastic Movement, they are having one research academy, they are saying no, it's 5000 metric tons. So Government of India, I don't know, Government of India is telling lies or Government of China telling or US Academy telling lies. But complete Indian market is flooded with artificial flowers. This is a big step. Very big threat, very big. Even though in that threat also, there are genuine customers, they will prefer only fresh flowers. There are people, small functions like birthday parties and all completely filled with the balloon decoration, artificial decorations. It is up to the orders taken by the event managers, decorators, they has to work on it. Because of, there are few money greedy people out there, they are doing these artificials. Chinese guys are very smart and intelligent.
they produce those artificial flowers. Clothes are more attractive than your natural. More attractive. More attractive. And sometimes you have to check it. Whether it is artificial, it is natural. Many times you confuse. Yes, sir. And we submitted one document to Bombay High Court that Chinese artificial flowers, they are having different grades, grade 1, grade 2, grade 3. The grade 1 is made by general plastic, grade 3 is made by decomposed waste plastic. The waste plastic contains more toxic contents, Yeah. which will affect our children's and elders people's or nervous systems. We submitted document also, so we are working on it. slowly जो extraction करते हैं ना सर, for example coloring का, cosmetics का, मतलब small companies, at least that can be done from the side by side, that has to be boosted. Yeah. So that in coming years, if this threat is increasing, at least the secondary party. Second to use it after. Secondary, वो तो natural seal. Natural. So, in India, out of 365 days, the demand of the flowers will be classified as different types. We can see that 120 days, out of 365, 120 days will be the high demand for flowers. That time, any flower, throw out flowers also will sell it in market. We don't want to waste a single petal of a flower. That time, everything will be consumed by the consumers. That's a very good peak days, 120 days. Another 120 days will be average and good. Another 120 days where we can recover our production. It will be very low, so that time you should not grow. Yes. Not grow, we need to keep rest. In a cut flower industry, the harvest will be continuous. That time we will keep rest and earthing up, soiling up, enriching the plant, like that activities we used to do. So that next cycle we will get a quantity and quality good. So based on this model only we need to work. Online trade, as we discussed, delivering flowers online, that is the recent trend, fetching good prices, and everybody wishes will be fulfilled. Recently, when I met with Tarun Joshi, Interflora MD sir, he said that they delivered 240 million flowers in last year. 240 million flowers they delivered through online. It became very easy to get in touch, get in access with the beloved one, any part of the India. There are also many companies are there, like Ferns and Petals, Interflora, Bloomsvilla, Flora India, Myflora, Poolwala. They are the largest players. We can able to tie up with them. They are ready to buy from us. Only thing they need timely supply, quality supply. They will give a schedule. Based on the schedule, we can grow the flowers and supply to them. They will directly. They are ready to buy directly from the farmer. As of now, they are also many people buy directly from the growers to give the benefit to the farmers directly. So we can do that. We can able to invite or we can interact with them and we can take his advices to grow the flowers. So we have, for example, in offline, if you visit to some flower market in Jammu Kashmir, Srinagar, we can able to see around 5 to 10 varieties of flowers commonly, and 2 to 3 varieties or rare flowers we can able to see. But when you are going in online, you can see 100 types of flowers. The flower which grown in Kerala will be there, the flower which grown in Gujarat will be there, northeastern state will be there, Kashmir flower will be there. Every flower is available in a single place, so that we can choose our flower basket. We can choose our flower basket selections based upon whom we are going to give. Based on that, we can choose many wide range of products available. Designs will be available. Few people know few designs, few people don't know few designs. But in online, in case maximum designs will be covered, so we can choose the best flower, best basket for anyone. Depends on the time, occasion, we can choose. That options is available in online. So in flower trade, I used to say one more thing. Where we are losing our money and where we are not able to make money. Yeah, please welcome. Yeah, come straight. Physiology was it? Physiology was it? So we can have a body. Okay. Average snatch more, average Very big. Okay.
Go to one thing. I will complete fast. After session, one more session is there. That time I will continue. Yeah, you continue in the next session. Latest session. Because this is the inaugural, we will just wrap it up. Okay. Okay. Yeah, Okay. that would be good. Okay. So, market. So we have recently two types of markets in Bangalore. Generally, they will fix the flower prices. International Flower Exchange in Bangalore and the International Flower Exchange in Oslo. In Oslo, we have around 78,000 square feet of area where we build up four storages in Bangalore, 96,000. There we are showcase the flowers and offline, online, both modes we are operating. Any person from any part of the India can buy flowers from us. And auction setups will be there. If a person growing a very premium exotic flowers in Jammu Kashmir, he can able to sell in our markets also. If you have premium flowers, you can send it from here to Bangalore Oslo markets, there they can sell. So key to success is FPOs, buyback setup, integrated crop management, technology transfer, utilization of government schemes. Utilization of government schemes. Please remember this word. It's a very important factor. National Horticulture Board giving 56 lakhs per family. Per family is husband and wife. If a child is more than 18 years, major child is considered as a separate entity for a family. So 56 lakhs to set up 1 hectare of polyhouse. You can get cold storage, reefer truck, drip irrigation, all the setups we can get in that. Apart from that, Agri Infrastructure Fund is providing. There are around 270 schemes, approximately 270 schemes from central government of India. For horticulture, majorly around 20 to 25 schemes are there. If we can utilize, our burden of investment will be reduced. At least 50%, 30 to 40% minimum reduction will be there. So we need to use the schemes of government of India. So my project cost in 2006 is around 80 lakhs. I got subsidy of 52 lakhs. So I don't have any burden. That will be a very important thing. We will discuss that later. Technology transfer, that is very important. Our university peoples will help us to transfer the technology. For me, Tamil Nadu Agriculture University, Dr. Jawaharlal, he helped me a lot in the beginning. So that is a very key to success from universities only. We should remember everything, our key success from university. So everywhere we should visit universities frequently, learn the technologies. We need to keep on updating growings. So buyback setup, before growing the crop, we need to be into the buyback setup. That will give the assured returns to us. After growing, we should not search where I am going to sell. Yeah. That will be a big trouble. We are not able to sell. After growing, if you take the flowers, even though it's good flower, good market, the buyer will ask for 50% of the price only. He will not give you full payment also. That should be very important. FPOs, apart from quality, quantity plays very important role. If you're having 1,000 roses, you can't send it from here to Delhi. If you have 10,000 roses, you can able to send it. The transportation cost will work out. That 10,000 can be achieved a group of farmers, self-help groups, FPOs, FPGs like that. Then you can achieve it. A single person growing 10,000 roses will be a difficult task. So growing needs quality planting materials, which can be supplied by universities and government agencies, assured the quality and the quantity of the plants. Recently, labor cost is increased and shortage of skilled workers. We need a skilled trained workers to enter into the floriculture business. Unlike other crops, that is easy crop, but floriculture is not like that. Harvesting, we need a technique. Grading, we need a technique. Packing, we need a technique. So skilled training is very important. Getting into that, we need a skilled and trained persons. And a promotion of semi-organic cultivation in floriculture industry to reduce the input cost. Getting into the input cost plays a very major important role. We need to be very careful about the spendings. If you have money, we should not spend crores together on floriculture. Even though we are having money, we should not spend on it. We need to go with the minimum investment, maximum output. That will give us good results. So R&D. Okay. As of now, we are contributing less than 1% in global markets, international markets. For floriculture, 800 meters, 800 to 850 meters from sea level is the highly suitable for floriculture. And by naturally Jammu Kashmir and Srinagar are situated in a good altitude, we have a good facilities here, so we can grow it good. So these and all we will discuss in afternoon session. Yeah. So here we give training to the flower arrangement. These are the people working on a flower arranging industry. We used to go on behalf of Flower Council of India, and we will provide training to the decorators
how to use the fresh flowers. Instead of using artificial flowers, they used to give artificial. When we are asking them why you are using artificial flowers, they say we don't know how to arrange it. We don't know names of the flowers. That time we used to go different places like Kodaikanal, Ooty, Salem, Tamil Nadu. Everywhere we will go and we will provide training to them how to prepare hand baskets, windows and skinners and all. These are the college students who used to visit my farm monthly 2 to 3 times. We will provide a growing techniques and other things to the college students. So we are fighting with artificial flowers. As I told, ban artificial, stop artificial. These are the hashtags we are using. Market issues are there. We will discuss it later. It's a very big topic. Market issues are the very big topic, and a few places underutilized of flowers also there. And the market setup, how we are selling the flowers, and where we are losing money. We need to know not only positives. If one person know positives, he will fill with full of positives. When he faces a small negative impact, he will get depressed. So we need to learn the what are the positives and also as negatives also. Then he can get a good knowledge in that. Yeah. Yes. It was good. And take care. Thank you, sir, for the session. Now, I would like to invite Dr. Mahendra Kumar Verma, Director of Sales for his remarks. Welcome, sir. Please. Honorable Vice Chancellor and distinguished guest, good afternoon to one and all. First of all, I am really thankful to the organizers that you have given me this opportunity for a very important program, especially the commercial floriculture. And it was very surprised to know that Kashmir is importing around 90% of the flowers, and only hardly we are having 10%. And there is a lot of scope if you wanted to harness this floriculture sector in many ways, like for the seeds, bulbs, or the coloring agents, oil, and the cosmetics. And there are many facets of this floriculture. I will just touch only particular points which are very, very relevant to the Kashmir floriculture. As Dr. Bala also said very rightly, that market is very, very important if we are dealing about this your floriculture. He just shared with us some of the information that only by selling 1.5 lakh flowers, Bangalore market, you will be getting 3 lakh rupees. In Delhi, 7.5 lakh rupees. In the Singapore, 30 lakh rupees. So likewise, I think we have to plan all those things. So what are the important flower crops? If we see the future of our Kashmir Valley, I just come to know there are only few flower crops. I just can name them: tulip, gladiolus, alstroemeria, and chrysanthemum. If we see their potential, but we must create a calendar, because here the climate is very, very peculiar. We have the extreme winters, summer is very, very short. So with the help of my floriculturist, I come to know that there is no scope to have the flowers in the month of January and December, 2 months. It is totally lean. But from the February month, we can have the daffodils. In the March, tulip, and in the April and May, roses are very good flowers. In June, gladioli, then July, dahlias and canna, then August, again the gladii, because there are the two seasons here. September, chrysanthemum. Almost around 2 to 3 months we have the
chrysanthemum period. Then I think this is the basket. We have to harness this period as per the climatic suitability. Yes, the market demand is entire different thing, but these two things we have to match, that what we can produce from the available our climatic zones. Then there are some of the other important floriculture crops like the begonias. You can have even from the July to the November. They have the very good, even the geraniums also, and the good quality carnations. Lot of scope is there. Even the Araucaria only for the small period of time, but it is very risky plant. But Dracaena and Pothos, especially for the indoor plants, I think there is some scope to harness the potential of these floriculture crops. If we see the export of these flowers, I think there are only two flowers we can see, that is rose and carnation. The climate of our Kashmir Valley is very suitable. All the roses specifically for export purpose, only the controlled conditions are permitting us by using the varieties like the your Grand Girl and the First Red in the carnation also. So these are some of the floriculture crops. If we can focus, if we can train our new entrepreneurs as per the market demand and the availability of the climatic seasons, I think there is a lot of scope. We can provide number of the flowers in many forms, either it is your seeds or the bulbs or the your valued products. So I think this is what just I wanted to share with you from my side, that we have to start this floriculture because that was started long back from the Mughal period, but it has not been harvested. There are many gardens, but I think there is a lot of scope, so we can turn it into the entrepreneurship. So with this one, I just wanted to thank the organizers and the university. Thank you one and all. Thank you so much. Thank you, sir. Now, I would like to invite Dr. Praveen Singh, consultant high-tech farming in hydroponics space and a prospect for indoor garden. Welcome you, sir. Initial comments, tomorrow you will have full time. Yeah. So, thanks to the organizers to giving me an opportunity to contribute for the two ends. One end is struggling to get the quality produce, be a vegetable, be a flower, be a fruit. On the other side, the producers, entrepreneurs, they are struggling to reach to that level where the people who are willing to pay, we should feel proud. Our country is doing a lot. Recently, if you talk about our high-tech farming, हमने भी पढ़ाई जो की थी, we started with the मिट्टी में खेती करना शुरू किया था, फिर उसके बाद बिना मिट्टी की खेती करना शुरू किया, मीन्स हाइड्रोपोनिक्स, एंड देन इवन बिना सूरज के भी खेती कर रहे हैं, दैट इज इंडोर वर्टिकल फार्मिंग. सो थैंक्स टू डॉक्टर मसूदी प्लस हमारे एनडीएमसी के डॉक्टर एनके शर्मा जी, because we are connected through a one single purpose of how we can transfer the knowledge. So as sir has said, we are going to talk on the subject tomorrow. How to do that, what even the market is looking for, because if
we are not able to match the requirement of farm, means the users. We in Delhi really struggle for getting the quality fruit, the quality vegetable, even the flowers also. There are work started, initiated with the government support. I am sure that we all aware that we are now growing the this one tulip, and I am also fortunate at least once I tried at our farm. So potential scope depends on your own. वो कहा है ना कि आवश्यकता जो होती है वही आविष्कार की जननी होती है. इसको थोड़ा और आगे अगर लेके जाए तो यस, जो भूख होती है वही आपको आपका रास्ता दिखाती है. आप कितने डेडिकेटेड है. ज्ञान हर जगह है. एवरीबडी इज हैविंग द नॉलेज. विलिंगनेस विच अकॉर्डिंग टू मी एक जो सोच है उसमें बदलाव लाने की जरूरत है. बाकी हम कल चर्चा करेंगे. एंड यस, एक यहां पे टेक्निकल डिस्कशन के साथ साथ I also will extend a potential market collaboration because I'm also working with one of the largest online food delivery system, Zomato, Linkage. So either it's a flower or even the fruits or vegetable. So tomorrow we'll discuss on that part also, but majorly what I'm going to talk tomorrow is on कैसे हम कंट्रोल अपना 100% करें किसी भी खेती के इवेंट में. वी ऑल आर एस्पायरिंग. अगर आप देखें तो जिंदगी में हमें कुछ नहीं चाहिए, 3 चीजें चाहिए होती हैं: फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी एंड देन हेल्थ सिक्योरिटी. सोशल सिक्योरिटी जब आप अपने को कंट्रोल, आसपास में लोगों को ये होता है कि यस हमें लोग जाने और हम हमारा जो एक दखलंदाजी है या हमारी जो एक पहचान है वो बढ़े. वही चीज इस हाइड्रोपोनिक्स और हाईटेक फार्मिंग की तरफ जब जाते हैं तो वही एक पहलू है जिसपे कि हम कोशिश करते हैं. इन इंडोर फार्मिंग सूरज भी आपकी इशारे से निकलेगा कितना फोटो पीरियड है, कितनी इंटेंसिटी देनी है, बिकॉज इंडोर वर्टिकल फार्मिंग में आप एलईडी लाइट से काम करते हैं. हाइड्रोपोनिक्स में भी क्योंकि मिट्टी जो है, मिट्टी में बहुत सारा अगर आप यहाँ पे आई एम श्योर दैट एग्रीकल्चर से लोग जुड़े ही होंगे. सॉइल की डेफिनेशन अगर बात करें तो सॉइल इज अ लिविंग डायनामिक बॉडी. लिविंग डायनामिक बॉडी मींस उसमें हमेशा बदलाव होता रहता है. और अगर हम हाइड्रोपोनिक की बात करें, हम करते क्यों हैं? क्योंकि वो डायनामिक, अगर किसान जो भी खेती करता है उसको अगर ये स्किल आ गई कि मैं उस डायनामिक जो रिएक्शंस है उसको कैसे हैंडल करना है, देन ही इज गोइंग टू गेट दैट प्रोडक्ट what the customer is looking for. और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है. अगर आप किसी भी मंडी में जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, people wait for the produce from that skilled farmer. और वो स्किल अगर आपको आ जाती है तो देन हाइड्रोपोनिक हाईटेक फार्मिंग इज अ सेकेंडरी ऑप्शन. अगर नहीं आती है तो लिमिटेड नॉलेज विद अ वेरी स्पेसिफिक कि साहब ऐसे ऐसे करेंगे तो ये निकल के आएगा. दिस हाईटेक फार्मिंग लीड यू टू दैट लेवल. So चलिए, thanks to the organizer and Dr. Masoodi that we are here. Tomorrow we'll talk more on this topic and I'll try to answer the questions because सवालों के जवाब देना ज़्यादा ज़रूरी होता है instead of कि just अपना बताना. So thank you very much. See you tomorrow. Yeah. Thank you, sir. Now, I would like to invite Professor and Team Students Welfare, Professor Nilupam ma'am. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Honorable Vice Chancellor, Professor Nazir Ahmed Ganai Sahab, Professor Harun Naik Sahab, Director Planning and the Nodal Officer of the MSME Training Programs, Dr. Verma, Director SIT, and other dignitaries, and our valuable
invitees from outside, resource persons, HOD Floriculture, my faculty members from Floriculture, students from Floriculture division, and the trainees, above all the trainees. Assalamu alaikum and a very good afternoon to all of you. Actually, everybody has said about the scope of floriculture, and everybody you will be listening to all what is the scope of floriculture. Now, as the topic for today's training program goes, this is commercial floriculture, a sunrise industry, management and linkage. So, what floriculture plays an important role in Indian horticulture sector, contributing significantly to its agricultural economy and global market. It is expected to grow to $5.9 billion by 2030. Floriculture traces its roots from the traditional practices to the modern export-oriented industries it has become today. Today, floriculture as a sunrise industry highlights countries' diverse agroclimatic zones and their influence on the cultivation of a wide range and array of the ornamental crops. It, uh, it explores the economic opportunities and employment generating potential presented in this sector. Further, it examines the government policies and an initiative aimed at promoting floriculture in India. Floriculture is an age-old farming activity having potential of generating self-employment and and marginal farmers, and is characterized by innovative and advanced technologies. The flori market is worldwide, experiences a fierce competition at economic level. However, there are some major obstacles in flourishing the floriculture industry in India, like high initial investment, limited availability of the quality plant material, environmental challenges are there, lack of proper infrastructure, and many more. And this is mostly based or is an event, as our worthy speaker was saying, that this is event based. Floriculture is event based. So you have some event, you have some festival, you have some season, then the demand is more, and you don't have season, the demand is less. So this is one of the challenges of the floriculture, that this is event and season based. And of course, there is unorganized market in India. Export constraints are there, and many more challenges are there. Some need of the hour is to address all these issues, and a program like this will be a way forward and to discuss and find solutions for various problems, and then submit the same to the government for making the policies. I wish Division of Floriculture a success for this training program and many more to come. Thank you very much. Thank you, ma'am. Now, I would like to welcome Mr. Devendra Kumar, Passport Officer, Kashmir. Sir, please welcome. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूं। यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम हम करते हैं, और फिर भी मुझे इनवाइट किया गया, तो इसके लिए आप सारे ऑफिसर्स का जो सीनियर्स यहाँ पे हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बेसिकली सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस का हूँ, और यहाँ पे 3 साल के लिए डिप्यूटेशन पे हूँ एज ए पासपोर्ट ऑफिसर। कश्मीर और लद्दाख में देखता हूँ। यहाँ पे एक बात ये आई कि जब पासपोर्ट ऑफिसर है तो एग्रीकल्चर में क्या इनका इंटरेस्ट है। तो 10 साल मैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में रहा हूँ। फार्मर्स के लिए मैंने बहुत काम किया है अच्छे लेवल पे, और मुझे बस एक चीज़ यही लगा कि इस हमारे कंट्री में जो मोस्ट एक्सप्लॉइटेड मतलब पर्सन मुझे दिखता है वो फार्मर दिखता है, और इसको मैंने मतलब प्रैक्टिकली रियलाइज़ किया। एक बार जो ये हमारी मंडियाँ होती हैं, तो हम ऐसे एक दुकान पे खड़े हुए थे, तो इसका
ये जो पैडी वाला सीजन आता है तो उसमें वो परचेज चल रही है वहाँ पे, कुछ परचेजर उसमें आते हैं, हर दुकान पे उसका वैल्यू लगाते हैं कि ये 1200 है, ये 1500 है, 1800 है, उसका क्वालिटी के ऊपर। तो एक जगह पे एक छोटा सा पैडी का एक ढेर पड़ा हुआ है, वहाँ पे रेट चल रहा है उस दिन 2800 रुपये का। 4 आदमी मंडी के आते हैं, उसको कहते हैं कि उसका रेट लगाते हैं 4 आदमी 1000 रुपये। तो जब वो 1000 रुपये 4 आदमी बोलते हैं तो सामने जो फार्मर खड़ा हुआ था उसका मुंह ऐसा हो जाता है जैसे बिल्कुल वाइट हो जाता है एकदम, जैसे उसका खून चूस लिया हो पूरा का पूरा। मतलब उसने 4 महीने 6 महीने उसने इतना मेहनत किया अपने फील्ड पे, 2800 का रेट उसको 1200 से लेके आ रहा है। तो मुझे ऐसे लगा कि इनके लिए काम करना चाहिए। तो प्रैक्टिकली एक मतलब रियलाइज़ किया कि इस फील्ड में मुझे काम करना है। बहुत सारी सेमिनार्स, इस तरीके की कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारे मैंने अटेंड किए। एक ही चीज़ मैं चाहता हूँ इसमें, जो भी एक्सपर्ट या स्पीकर्स या जो भी यहाँ पे आते हैं, कोई भी ट्रेनीज को मतलब ट्रेनिंग शुरू होने से पहले उनको मटेरियल कुछ एडवांस में दिया जाए उन ट्रेनीज को, ताकि वो उसको पढ़ के आए और वो प्रोग्राम जो है वो थोड़ा इंटरेक्टिव हो सके। जैसे अभी सर ने बोला, नाम सर आपका क्या है? डॉक्टर परवीन साहब ने बोला कि हमें अपने बारे में बताने के बजाय हम जिस चीज़ के लिए आए हैं उस चीज़ को वो नॉलेज शेयर करें हम। तो हमारे जो 10 जितने भी यहाँ ट्रेनीज हैं उनके लिए मोर बेनिफिशियल होगा कि बजाय कि हम अपना पूरा बायोडाटा बताते रहे, ये किया हमने वो किया, लेकिन हमें जो एक्चुअली डिलीवर करना है हमारे ट्रेनीज को, वो उसमें ज़्यादा टाइम निकलना चाहिए। और जब इंटरेक्शन होगा, जब पहले से कोई आदमी उस मटेरियल को पढ़ के आएगा तो आप 10 क्वेश्चन लेके आएगा, उसमें मार्केटिंग भी हो जाएगी, इंस्टॉलेशन भी हो जाएगी और कैसे उसको स्टार्ट करना है, किस तरीके से इस बिजनेस को में क्या क्या मतलब डू एंड डोंट्स हैं, वो सारा अगर बना के लाए वहाँ पे। क्योंकि किसी ने प्रेजेंटेशन दिया, प्रेजेंटेशन किसी ने देखा, किसी के दिमाग में रखा, किसी ने नोट किया, पूरा नहीं दिमाग में रह जाता है। तो सबसे ज़्यादा यूजफुल यही रहेगा कि हम उनको, जैसे हमने ये हमने दिया है अपना ये मटेरियल हमने दिया है इनको, इसी में सारा जितने भी स्पीकर्स आ रहे हैं उसका उस दिन का मटेरियल एडवांस में या तो ईमेल हो जाए उनको, या उनको एडवांस में दे दी जाए ताकि वो अपना क्वेश्चन आंसर बना सके उसमें। दूसरा एक चीज़ और है, ये यहाँ पे मैंने जो सबसे अच्छा एक चीज़ महसूस किया यहाँ पे, जो एग्रीकल्चर और एमएसएमई का जो ये अब आपस में कॉम्बिनेशन हुआ है। क्योंकि मुझे लगता है आज की डेट में एग्रीकल्चर से ज़्यादा स्कोप किसी इंडस्ट्री में नहीं। इसमें आप मतलब हर इंडस्ट्री में स्कोप मतलब एक लिमिटेड स्कोप है, पर एग्रीकल्चर हैज़ नो मतलब नो लिमिट, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो और इसमें जो एमएसएमई का जो सपोर्ट जो एमएसएमई कर रही है, और प्लस में एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर में जो साइंटिस्ट हैं अपने अपने फील्ड में जो ट्रेनिंग वो लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं। तो बच्चों को आज की डेट में नौकरी नहीं चाहिए, उसको एम्प्लॉय नहीं एम्प्लायर बनना है। मैं तो सबसे यही कहता हूँ, जब आप एम्प्लायर बनेंगे तो एक बड़ी सोच के साथ रहेंगे, बड़ी सोच रहेगी तो आप 10 आदमी को और एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो ये सारी ट्रेनिंग्स जितना भी है एमएसएमई सपोर्ट कर रही है सबके लिए, मतलब अच्छी अच्छी लेवल की इसमें सब्सिडी भी दी गई है। तो इसका जितने भी हमारे ट्रेनीज हैं वो कम से कम ये सोच के चले कि हमें, जैसे डॉक्टर अभी शिवाजी ये आए हैं हमारे, इन्होंने एक छोटे से उससे शुरू किया, लेकिन आज
यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम मतलब अगर इनको देखेंगे तो ये हमारे यंग एंटरप्रेन्योर हैं जो आप सबको मतलब आप सबके लिए एक आइडियल हो सकते हैं। तो इन ऐसी चीज़ों को हमें छोटा नहीं सोचना है। ट्रेनिंग्स के लिए बोल रहा हूँ कि हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें बड़ा ही सोचना है। जब बड़ा लेके चलेंगे तभी हम बड़ा कर पाएंगे। जैसे हमारे पासपोर्ट ऑफिस में मेरे अंडर में 3 पीओपीएस केस है जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम चलाते हैं। तो 2 बंदे मैंने कल उनको बुलाया पोस्ट ऑफिस के, उनको कुछ ट्रेनिंग देना था, उसके लिए एक डोंगल बनता है हमारे यहाँ पे, उसके लिए तो आए वो। तो कहते हैं कि सर मैं तो पोस्टमैन रहा हूँ, मैं तो जानता ही नहीं कंप्यूटर। एक कहती है कि मैं तो सर एमटीएस हूँ, मैं कैसे बैठूंगी वहाँ पे। मैंने कहा आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अच्छा काम करने की, जो आप सोचते हो कि मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोस्टमैन बनाया या एमटीएस बनाया, आपको हम पासपोर्ट का एक अच्छा एक लेवल देने जा रहे हैं। पासपोर्ट आप बनाएंगे, लोगों में आपकी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन सर हम तो कभी किया ही नहीं कंप्यूटर पे काम। मैंने कहा आप अपनी सोच को लिमिटेड मत रखो। अगर आपने अपना सोच लिया कि मैं नहीं कर सकता, देन यू कांट डू, आप कभी कर ही नहीं सकते उस काम को। इसलिए बड़ा सोचो, जब बड़ा सोचोगे तभी बड़े बनोगे। हम छोटे से थे, मैं अपनी खुद की बात बताता हूँ। मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोचता था कि मैं बहुत सारे टेक्निकल लेवल लोगों को मैं हायर कर सकता हूँ, मैं मुझे ऊपर वाला इस लेवल पे पहुंचाए, ताकि जो मैं काम करना चाहता हूँ, ताकि जो मैं सेवा करना चाहता हूँ, मेरे अंदर मैं सोचता था मेरे अंदर आइडियाज हैं, मैं उनको कैसे करूंगा, क्योंकि मैं खुद टेक्निकल नहीं हूँ। लेकिन मैंने फिर सोचा मैं टेक्निकल नहीं हूँ, लेकिन टेक्निकल लोगों को हायर करके मैं लोगों की सेवा कर सकता हूँ। तो अपने आप को सोचो कि हमें वो बनना है लाइफ में। देखिए हर आदमी कुछ ना कुछ टैलेंट लेके पैदा होता है। सबसे पहले वो अपने आप को खोजे कि मैं एक्चुअली मुझे लाइफ में करना क्या है। अगर यहाँ पे हमारे पास 25 30 50 आदमी आए हैं यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग लेने के लिए, कुछ उन्होंने सोचा होगा कि हमें इस फील्ड में ही क्यों जाना है, एग्रीकल्चर के उसमें जाना है तो एग्रीकल्चर में क्यों जाना है। तो हर एक में एक यूनिक क्वालिटी ऊपर वाला देता है, उसको पहचानना है अपने आप में। जब तक नहीं पहचानोगे तब तक नहीं कुछ कर पाओगे। एक्चुअली लाइफ में मुझे क्या करना है, ये हमें लाइफ में क्लियर होना चाहिए हमारे ऊपर। अगर वो क्लियर नहीं है तो हम किसी भी स्टेज पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले अपने आप को जानना होता है। आप क्लियर कीजिए अपने बारे में, मुझे इस लाइन में जाना है, इस लाइन में मुझे हाइट पे जाना है। एक मतलब कोई भी काम मैं जैसे हम गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो हमने देखा कि कोई भी सीट कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। इवन स्वीपर का काम भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, 2 दिन ना आए तो ऑफिस में बैठा नहीं जाता है। तो हर आदमी की एक वेटेज है, हर आदमी की एक वैल्यू है, ऊपर वाले ने हर आदमी को किसी ना किसी ठीक ठीक। तो बस मैं जस्ट यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी ट्रेनिज के लिए खाली है ना, कि वो सपने बड़े रखें, और जब सपने बड़े रखेंगे तो बड़े बनेंगे। और सपने वो होने चाहिए सोते हुए नहीं, जो हमारे अब्दुल कलाम जी कहते थे, सपने हम वो होने चाहिए जो हमें सोने ना दें, है ना। तभी आप अपने उस सब सपनों को पूरा कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू। थैंक Honorable Vice Chancellor, before that, I would request Professor Harun to facilitate our speeches because he's having some technical Sergeant Cloud and Dynamite Vice Chancellor, where they given us this meeting, where they have given us direction how to move ahead. Because I think they have taught us how to develop entrepreneurs, how to build a cluster. Thank you very much, sir. सर में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए।
मैं ज़्यादा उर्दू हिंदी में ही बात करूंगा। लोग अंग्रेजी में बोल रहे थे तो मेरे जो पीछे लोग बैठे हैं शायद कुछ समझ गए होंगे, कुछ नहीं समझ गए होंगे। आज जो ये हमारा हाल है, वैसे हर रोज़ कुछ फूलों से ये सजता है, लेकिन आज ये हमारा हाल ऐसे लोगों से सजा हुआ है जो फूलों को बनाते हैं, फूलों के बारे में जो बिजनेस करते हैं। तो आज हम इसलिए ज़्यादा ये हाल प्रिविलेज्ड है। तो इसमें हमने कुछ डिस्टिंग्विश्ड हमारे गेस्ट हैं, कुछ एक्सपर्ट्स को हमने यहाँ पे बुलाया है देश के कई हिस्सों से, जो आज हमारे साथ रहेंगे आज और कल में, या जो 7 दिन में। तो मैं उनका अपनी तरफ से वेलकम कर लेता हूँ। हमारे जो डॉक्टर प्रवीण सिंह जी हैं, अभी अभी आए हैं, कल तक भी यहाँ पे रहेंगे, हाइड्रोपोनिक्स के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर बाला शिवा प्रसाद हैं, जो अभी आपने उनको सुना, इतना ज़बरदस्त उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। आपका भी स्वागत है। और हमारे जो मिस्टर देवेंद्र कुमार जी हैं, हमारे पासपोर्ट ऑफिसर, आपने उनका एक बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच सुना यहाँ पे आप बच्चों के लिए कि आपको आगे कैसे ग्रो होना है। और मेरे कलीग हैं डॉक्टर हारून साहब, डॉक्टर नीलोफर जी, डॉक्टर ज़मीर है, डॉक्टर नाज़की साहब हैं, डॉक्टर मसूदी हैं, और बाकी हमारे जो इस डिवीज़न के ऑफिसर्स हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ ग्रोवर्स भी हैं यहाँ पे। अच्छा, खासकर हमारे जो ग्रोवर्स हैं यहाँ पे, वो फ्लोरिकल्चर बिजनेस और मेरे स्टूडेंट हैं। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल। बहुत अच्छा लगा कि ये प्रोग्राम आज हम यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं। इसकी जो मैं क्रेडिट देता हूँ अपने डॉक्टर हारून साहब को। 2-3 सालों से उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के साथ राबता करके उनका सपोर्ट लेके हम कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हम लोगों को शॉर्ट स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं। नॉर्मली हम यहाँ पे पहले 4 साल का ग्रेजुएशन, 6 साल का एमएससी और 8 साल का पीएचडी वाला डिग्री देते थे। तो जैसे ही जैसे आप बड़ी बड़ी डिग्री लेते हो, उतना ही आप जो है ना अपना स्कोप लिमिटेड करते हो, है ना। किसी ने बीएससी एजी किया, वो कुछ कर सकता है, लेकिन जब उसने मास्टर्स कर दिया एग्रीकल्चर में किसी एक सब्जेक्ट में, उसके बगैर उसको कुछ सूझता नहीं। अगर उसने खुदा न खासा पीएचडी करी तो फिर और भी कुछ को नहीं सूझता। तो हमने पहले जोर लगाया था कि हमने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ही लोगों को स्किलफुल बनाना है, क्योंकि हमारा जो मॉडल ऑफ एजुकेशन है इस यूनिवर्सिटी का, वो सारे देश का मॉडल बन गया है। ये जो मेरे सारे कलीग यहाँ बैठे हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है, हमारा मॉडल ऑफ एजुकेशन अब देश का मॉडल बना है। वो था यूजी लेवल का, लेकिन हम ये सोचा 4 साल लगाने में फिर भी टाइम लग जाता है। आज लोगों के पास जो सबसे कीमती चीज है वो है वक्त। लोगों के पास समय नहीं है। तो फिर हमने 3 सालों से ये सोचा कि नहीं, इस 4 साल से इसको कम करेंगे, 1 महीना करेंगे, 2 महीना करेंगे, 3 महीना करेंगे। उतने में ही हम अपने बच्चों को जो कुछ पढ़े लिखे हैं, थोड़ा या ज़्यादा, उनको हम कुछ हुनरमंद बनाएंगे। उसी सिलसिले में अभी हारून साहब बता रहे थे कि हमने पिछले साल एमएसएमई के करीब 500 ट्रेनिंग प्रोग्राम थे, और इस साल भी करीब 500 ट्रेनिंग प्रोग्राम और भी हम कर दें, तो मैं अपने सारे ऑफिसर्स को इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। तो फ्लोरिकल्चर को आज खास बधाई मैं इसलिए भी देता हूँ कि 3 सालों में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन किया अपने लेवल पे, क्योंकि एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, हम कोई प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर तो है नहीं। अगर कॉरपोरेट सेक्टर हमारी जगह हो जाता तो पता नहीं उन्होंने क्या किया होता, है ना, एक नई यूनिवर्सिटी बना दी होती। लेकिन फिर भी एक गवर्नमेंट सेक्टर में रहते हुए यू हैव डन अ मार्वेलस जॉब। तो आई कॉम्प्लीमेंट यू। और अभी आप बने हो एक बहुत बड़ा निडस बने हो आप लोग, अपने जो लोग हैं, फार्मर लोग हैं, अपने जो किसान भाई हैं जो इसमें आना चाहते हैं, तो आप ही उनके लिए एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये हम रहेंगे 6 दिन 7 दिन चले जाएंगे तो सभी लोग एक्सपर्ट अपने अपने घर जाएंगे, लेकिन यही फार्मर जो है इस बिजनेस के साथ में, तो आपके साथ ही वो हमेशा जुड़े रहेंगे, तो आप हमारे लिए बहुत ही अहम हो। तो और खासकर जो आज का वाला प्रोग्राम है यहाँ पे, एंटरप्रेन्योरशिप इन फ्लोरिकल्चर, तो मैं शुरू से ही बताता हूँ कि बाकी देश में भी बहुत कुछ स्कोप है बिजनेस का, इकोनॉमी को बढ़ाने का। इंडस्ट्रियल सेक्टर हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो सकता है वहाँ पे, है ना। तो लेकिन कश्मीर में मैन्युफैक्चरिंग का और इंडस्ट्रियल सेक्टर का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। हम यहाँ पे एक हमारी लोकेशन, जो लोकेशन कुछ ऐसी है, फिर दूसरे यहाँ का वातावरण, एनवायरनमेंट है, फिर यहाँ पे बड़ा ही फ्रेजाइल क्लाइमेट है। अगर वो नहीं है, लेकिन हमारा जो स्कोप है वो है इसमें एग्रीकल्चर से और रिलेटेड
इसमें है, हमारा बड़ा ज़बरदस्त स्कोप है, क्योंकि नेचर ने हमें दी है ये जो नो बस्टो किया है इतनी सारी दौलत, एनवायरनमेंट, और हम जो यहाँ पे पैदा करते हैं यहाँ पे, पहली बात तो हमारे लिए खुशकिस्मती है कि मतलब सारा देश इतना बड़ा है, 1.5 करोड़, 150 लोग हैं, इतना बड़ा मार्केट है। और दूसरा, चूंकि ज्यादातर अपना देश का हिस्सा वो है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, और हम है टेम्परेट में। तो टेम्परेट में हम जो प्रोड्यूस करेंगे वो बाकी देश के लिए बिल्कुल ही यूनिक है, या तो यूनिक है, निश है, या वो ऑफ सीजन है। तो इसलिए हमने इस बात का फायदा उठाना है। तो जहां तक हम फ्लोरिकल्चर की बात कर रहे थे अभी, जैसे बाला साहब जी बता रहे थे कि बहुत सारे फूल के नाम ले रहे थे वो, हमने देखना है कि हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में खासकर। उसके बाद डॉक्टर वर्मा ने भी कहा कि हमें देखना है कि अपने वातावरण, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के हिसाब से यहाँ पे क्या ग्रो कर सकते हैं। तो अगर हमने 2 3 4 चीजों पे कंट्रोल कर दिया वो हमारे लिए काफी है। इफ आर एबल टू कंट्रोल 3 4 थिंग्स एट द नेशनल, इतने बड़े देश में 3 4 चीजों पे अगर हमने कंट्रोल करना सीख लिया, तो मुझे तो लगता है कि वो हमारे लिए काफी ठीक है, बजाय इसके कि हम हर कुछ कल्टिवेट करना यहाँ पे शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो बल्ब्स है यहाँ पे, ट्यूलिप बल्ब्स और लिलीज है ना बल्ब्स, करीब 400 से 600 करोड़ का हम तो हर साल इंपोर्ट करते हैं। अब आप एयरपोर्ट दिल्ली के बाहर जाइए, आप देखिए क्या जबरदस्त हमारी एयरपोर्ट बाहर सजे हुए हैं। किसी भी एयरपोर्ट में जाइए, हर जगह हमें चाहिए ऐसे क्रॉप्स। तो बल्ब्स क्रॉप जो है ना, ये टेम्परेट क्रॉप है, हम इसको अगर कर सकते हैं तो कश्मीर में ही कर सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि बल्ब मल्टीप्लिकेशन चक्कर है, बल्ब तो खिलेगा, फूल उसका निकलेगा, कहीं पे भी, दिल्ली में भी निकलेगा, कोलकाता मद्रास में भी निकलेगा, लेकिन बल्ब मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें हर साल नीदरलैंड जाना पड़ता है। हमें मिलता था एक बल्ब 15 20 रुपए में, और अब की बार 40 रुपए में नीदरलैंड ने बल्ब का कॉस्ट बढ़ा दिया है ना, इतना सारा। तो मैं कह रहा हूँ कि हमने मैप करना होगा अपना एनवायरमेंट, अपना क्लाइमेट, देन जो अभी बाला साहब कह रहे थे, हमें जो उसके फिर मैप करना होगा कि जो अपॉर्चुनिटीज, मार्केटिंग जो है हमारा, कि जो डेज हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, डेज हैं, फेस्टिवल्स हैं, तो उस सारे के साथ मैप करके हमने अपने फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे जब ये मैं सोई पाते हैं बर्च सारी, जब ये फूल चाहे लूज फ्लावर्स हैं, कट फ्लावर्स हैं, जब ये प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, तो हर बार गवर्नमेंट को ये बोलते हैं कि सर फूल तो बना लिया, अब भेजेंगे कहाँ? तो आज मिस्टर बालाजी के इस एक्सपीरियंस से हमें पता चला कि प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता कि कब ग्रो करना है और कहाँ बेचना है और कैसे बेचना है। तो इसीलिए मैंने गुजारिश करी है आप लोगों को, इनके साथ के बैठ के एक पूरा कोर्स आप स्ट्रैटेजी बनवा दीजिए, उसका सिलेबस भी बनाएंगे, और उसका बाद में उसका जो है सिलेबस के डिटेलिंग भी करेंगे, हमने उसके ट्यूटोरियल्स भी बनाएंगे। तो अगर हमने ये कर दिया, एक तो अपने बच्चों को भी सिखाएंगे जो यहाँ पे बच्चे हैं, और दूसरे जो हमारे ग्रोअर्स हैं, मुझे लगता है कि इसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है लॉजिस्टिक्स, जैसे एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है या MIDH है, बहुत सारी स्कीम्स हैं जहां से हम फायदा उठा सकते हैं। लेकिन पैसा हमने गवर्नमेंट से लिया, चाहे लोन लिया, सब्सिडी, वो कुछ भी कर लिया, लेकिन ये नहीं पता इस पैसे को यूज कैसे करें, है ना? लगाने के बाद फिर जब बाजार में आ गए, हम क्या करते हैं कि फूल तो प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद करने के बाद हम जाते बाजार में, हमारा कोई फूल खरीदेगा नहीं। इट हैज टू बी प्री डिसाइडेड। जिस दिन मैंने अपना फूल खेत में लगाया, मुझे उसी दिन पता होना चाहिए मैंने बेचना किसको है। सो दैट लिंक हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड बिफोर वी स्टार्ट सोइंग द सीड्स, तभी जाके हमें वो एश्योर्ड प्राइस मिलेगा, हमें बाजार में घूमना नहीं पड़ेगा। जैसे अभी ये कह रहे थे देवेंद्र जी कि जो है ना, मंडी में वो ले गया अपना कोई माल, तो चार वो जो मंडी वाले वो आपस में मिल गए, उन्हें बोला चलो ठीक है 3000 में 1000 कर दो। वो क्या करेगा बेचारा? माल आप मंडी में गए और उन्होंने आपस में वो कर दिया, यार चलो ठीक है, हम ही प्राइस डिसाइड करेंगे। लेकिन तो ये जो मार्केटिंग, इसको भी हमने ठीक करना होगा। तो बच्चों के लिए हमने करिकुलम को ठीक करना होगा, तो आप उसको सर देख लीजिए। और दूसरा, अगर हमने कमर्शियल फ्लोरिकल्चर पढ़ाना है, आप एकेडमिशियन है तो आपके लिए ठीक है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में एक सिस्टम है कि हम जो इंडस्ट्री से लोगों को इन्वॉल्व करेंगे इस प्रोग्राम में, जिसको हम बोलते हैं फैकल्टी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस या एडजंक्ट फैकल्टी, वट एवर इट इज। जैसे कल भी हमने FPOs के बारे में कहा था, हमारे यहाँ पे एक दोस्त हैं बैठे हैं, तो हमने इनको रोप इन करना होगा, और अगर हम ऑनेस्टली इनसे अप्रोच करेंगे तो ये वेलकम करेंगे, और कश्मीर में आने के लिए भी किसी को रीज़न चाहिए तो हम उस रीज़न से भी आएंगे, और उससे हमें भी फायदा होगा। और जब आप एक कॉन्सेप्ट, एक थीम, अगर एक विजन या उनको ये बताएंगे इंडस्ट्री को कि भाई
एक कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पैसे बांटे। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ से भी पूरी हो सकती है कि अगर वो इंडस्ट्री का बंदा यहाँ पे आके हमारे बच्चों को ट्रेन करके कुछ उनमें से एंटरप्रेन्योर्स को जनरेट करेंगे और हम कल एक सर्टिफिकेट देंगे, भाई इस एक्सपर्ट की वजह से इतने सारे हमें एंटरप्रेन्योर्स बने। तो आप उनको भी रोपन कर दीजिए। देखिए जो हमारे एक्सपर्ट आज आए उनको भी हम गुजारिश करेंगे और उनको भी क्रेडिट जाएगा, ये भी एक सोशल सर्विस है। और उसके अलावा में जो अगर हमने कमर्शियल फ्लोरिकल्चर तो टेक्नोलॉजी के बगैर तो कुछ होगा नहीं। वी कैन नॉट कीप ऑन ग्रोइंग फ्लावर्स इन ओपन फील्ड्स, ठीक है ना। सो बिकॉज आपका क्वालिटी बहुत पुअर होगा, आपका यील्ड बड़ा कम होगा, आप सीजन को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कोई ऐसा फ्लावर है जो जिसकी डिमांड है बाहर देश में, लेकिन हमारे यहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं है, तो हम इसको माइक्रो एनवायरनमेंट में, इंडोर में, वर्टिकल में या भी है उसमें हम कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का भी आप देख लीजिए। और मुझे तो लगता है कि मैंने जब से मैं आया हूँ तब से मेरा फोकस ये है इस यूनिवर्सिटी में कि हम फ्लोरिकल्चर को प्रोटेक्टेड सिस्टम में कैसे लाएंगे। एंड आई बिलीव दैट 2-3 प्रोग्राम्स आर हैपनिंग एंड यू आर पेइंग गुड अटेंशन टू दैट। और आपने बहुत अच्छा काम पहले से भी किया, बट देन वी शुड सी दैट जो भी बाहर के देशों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके उनका मैनी फोल्ड के 10 फोल्ड से भी ज़्यादा उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, वो भी ठीक है। और लास्ट में मेरी एक आपसे गुजारिश है कि हम यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हुए हैं, यूनिवर्सिटी ग्रीन इनिशिएटिव। उस ग्रीन इनिशिएटिव में हमारा एक फोकस है कि हम सीवेज वाटर को कैसे हैंडल करेंगे, ट्रीट करेंगे। जैसे कोई कलीग मुझे बता रहे थे, ये बता रहे थे सुबह बालाजी शायद या कोई मुझे बता रहा था, आप ही बता रहे थे कि मतलब साउथ पार्ट ऑफ द कंट्री में जब उसको वो डाल देते हैं, उसको अनट्रीटेड या सेमी ट्रीटेड पानी को डाल देते हैं तो हैवी मेटल्स में आते हैं। तो हम एक तो एसटीपी का ट्रीटमेंट होगा, दूसरा होगा हमारा प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग करेंगे हम, वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग होगा, और होगा एग्री वेस्ट रिसाइकलिंग। बट दैट डज नॉट मीन दैट वी हैव अ रिसाइकलिंग प्लांट, वी विल कीप ऑन प्रोड्यूसिंग द वेस्ट। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि, और हारून साहब से गुजारिश है कि इंस्ट्रक्शंस मस्ट गो टू ऑल एवरीवन दैट नेक्स्ट टाइम वी शुड नॉट सी दीज plastic folders anywhere, even if it is me or even if it is governor साहब of Jammu and Kashmir, no plastics at all। तो बाजार में हमें मिलते हैं वो नॉट ओनली जूट, मे बी जूट और मे बी उससे भी चीपर, वो गत्ता का नहीं होता, पेपर फोल्डर, मोटा पेपर आता है। तो प्लीज डू वन थिंग, ये भी एक हमारा एक मतलब कंट्रीब्यूशन हो गया एनवायरनमेंट को। तो आज के बाद जो आप लोगों ने खरीदा तो उसको बांटो, लेकिन आज के बाद यहाँ पे प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। इवन इफ देयर इज गवर्नर साहब हियर, तो मैं उनको ऐसे बोतल में पानी रखूंगा। नो नीड टू गिव दैट वाटर, यू विल अप्रिशिएट दैट, और आपको करेगा अप्रिशिएट। तो इस तरह से ये मेरी थोड़ी सी। और जो ये फूड वेस्ट मैंने देखा यहाँ पे, आपने बहुत भर के लाया था प्लेट में, मुझे लगता है किसी ने खाया नहीं, तो थोड़ा सा फूड वेस्ट को भी हम कर देंगे, है ना कम। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सब लोगों को। और मैं खास बात एक बात बताऊँ, यहाँ पे हमने क्या किया कश्मीर में, वर्मा जी कह रहे थे कि मार्च के महीने में थोड़ा सा यहाँ पे लीन रहता था, उसमें ट्यूलिप हमने लाया। तो इस तरह से सितंबर, अक्टूबर और नवंबर भी एक लीन सीजन है, तो आपने क्राइसिंथेमम की काफ़ी सारी वैरायटीज़ को यहाँ पे लाया। तो कल शायद चीफ सेक्रेटरी साहब सुबह आ जाएंगे 9 बजे, तो थोड़ा सा आप देख लेना, वो मुझे शाम तक कन्फर्म, उन्हें कहा वो आएंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं कि सबको, कल संडे है, वो थोड़ा सा देखेंगे, वो बड़ा फ्लाइंग विजिट होगा उनका, उसके बाद उन्होंने सीधा एयरपोर्ट जाना है ना। तो अब चूंकि हमारे चीफ सेक्रेटरी है, तो डोंट वरी, आई विल मैनेज माई सेल्फ, बट देन आई एम जस्ट टेलिंग टू यू दैट ही वुड बी कमिंग। सो मैं सब लोगों को बधाई देता हूँ, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं आपको, और जो मेरे ट्रेनिंग्स हैं पीछे, यम तु छो ना सारी पत कन छो तु यम ग्रो छो, तु क्या करो काम, तु बिजो न पगह इत पे थप कर तमाम यम सवाल आसन, सह सवाल क्युत तह खराब इन कोता तह असल इन, तम गन पृथन। तह पज यह दिमागस मज थवन कह कि हे खबर मोन सवाल ठीक, खबर यह यमन पसंद, बाकी क्या वन दपन मा शायद अमिस पाई, वो सोचन वोचन सह कह। यमन कह सवाल पृथन, क्या अगर अस सवाल पृथो तेल नेर सान कथन फुट, कि ना। तो यह बड़ अहम सेक्टर, इत सब्जी वनान, मेव वनान, दान वनान, इथे कट यह फ्लावर बिजनेस बोड़ बार बिजनेस। तो बकर, और मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि जितने भी यहाँ पे कितने लोग हैं आपने ट्रेनिज, 35 है। तो 35 का आप कल एक थोड़ा सा एक उनका एप्टीट्यूड टेस्ट करो, कौन बच्चा या कौन ट्रेनी हमारा किस
खास फूल में वो अपनी दिलचस्पी रखता है। तो अगर आपने 3-3, 4-4 को एक ग्रुप बना दिया, बोला मान लो 4 ने बोला जी हम ये वाला करेंगे, तो थोड़ा सा ग्रुप बना के उनके साथ हम टच में रह के फिर बाद में देखेंगे कि ये बच्चे जब वापस, ये जो सारे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जब यहाँ से जाएंगे हम उनकी कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो सारा समय हमने यहाँ पे दिया, अपना वक्त यहाँ पे दे दिया, एक्सपर्ट्स को यहाँ पे बुलाया, इसका कुछ आउटकम निकलना चाहिए। और हमारा आउटकम है ये बच्चे कैसे एंटरप्राइजिंग बनेंगे। और दूसरा हमारा जो इसमें आउटकम है कि जो बच्चे यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, कल मैं आया ना आपके पास फील्ड में, तो आप लोगों को टारगेट है कि एवरी वन ऑफ यू विल प्रोड्यूसिंग 50,000 सैपलिंग्स। ये मेरे ख्याल में आपने लिख दिया होगा कल उसमें। तो मैंने ये भी कहा कि हम इन बच्चों को डिग्री देंगे नहीं, विल नॉट गिव द डिग्री बिफोर यू प्रोड्यूस अस 50,000 सैपलिंग्स एवरी ईयर। उससे क्या होगा, हम थोड़ा सा कभी कभार आपके माँ बाप आपको मजबूर करते हैं कोई काम करने के लिए, टीचर भी आपको किसी काम को सिखाने के लिए मजबूर करता है। यू शुड नॉट टेक इट कि दैट वी आर बीइंग फोर्स्ड टू डू समथिंग लेबर क्लास गाइस, नो। जब आप बच्चों ने आज ग्रेजुएशन के टाइम में एक साल में 50 सैपलिंग्स प्रोड्यूस करी, अब मैंने बोला अगर एक सैपलिंग का या जो है 10 रुपए की कीमत हो तो कितना हो गया, 50,000 को 10 से मल्टीपल हो कितना हो गया, 5 लाख। 5 लाख में मान लो 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्चे है, 2 लाख खर्चे, तो 3 लाख हो गए, तो फिर भी आप 1.5 लाख रुपए कमाएंगे आप, ठीक है कि नहीं। तो आप अपने, और ये आप फ्लोरिकल्चर से कर सकते हो। अगर मैं एग्रीकल्चर के उस बच्चे से कहूंगा कि जो धान की खेती करता है, मान लो वो बेचारा साल में क्या करेगा, वो एक ही बार हो जाता है, उसमें कोई ज्यादा प्रॉफिट रिन्यूमरेशन नहीं होता। तो कम से कम जो आप सभी बच्चे फ्लोरिकल्चर में हो, आप अपने आप को अपने पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट कर सकते हो, समझे आप। एंड वी विल प्रोवाइड यू ऑल सॉर्ट्स ऑफ फैसिलिटीज, समझे बच्चे। और आपने क्या करना है, आपने ये भी देखना है, इनके साथ जो अभी बालाजी ने एक अपना वो स्पीच में कहा कि हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजी सीखना होगा, मार्केट इंटेलिजेंस सीखना होगा। ये नहीं कि बेवक्त हम काम करें, पता नहीं है भाई, कभी भी कुछ भी करो। अपने कैलेंडर को प्लान करो, फिर हाथों से काम करो, समझे कि नहीं। तो प्लीज सी दैट इट शुड बी पार्ट ऑफ द करिकुलम ऑफ दीज स्टूडेंट्स एंड check that they are doing it. So मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे कल बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे और बालाजी को रिप्लेस करेंगे, और जो है ना और जो है ना प्रवीण सिंह को रिप्लेस करेंगे। तो अब आप अपना टारगेट आपके पास है, हाउ डू यू रिप्लेस बालाजी एंड हाउ डू यू रिप्लेस डॉक्टर प्रवीण, ये टारगेट आपका होना चाहिए। बोलो, करोगे, है ना। हम जरूर करेंगे, इसका मतलब रिप्लेस करने का मतलब रिप्लेस हो गई। वी विल क्रिएट मोर बालाजीज एंड वी विल क्रिएट मोर प्रवीण्स, ठीक है कि नहीं। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। आप मुझे जाने देंगे, मुझे जाना है, मैं उधर भी है, क्या करना है? अच्छा चलो। देवेंद्र कुमार पासपोर्ट ऑफिसर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं to kindly facilitate Dr. S.K. Verma with date 16. So pending. बच्चे ने वो इतना खूबसूरत बनाया था, अगर हम ये पैसा उसी बच्चे को दे देते, तो परसों नहीं देखा आपने प्रजापति की वो लड़की थी ना, जिसने वो बिल्ली बनाई थी, फूल लगाए थे, पता नहीं बच्ची आई थी यहाँ पे, वो आज कर गई होगी। तो ये कहते हैं सारा प्लास्टिक है, मेटल है, ये है वो है। तो हम आज के बाद अगर आप फ्लोरिकल्चर डिवीजन में वही करेंगे, इसको रिप्लेस ही कर देंगे, उसमें इतना खूबसूरत बच्चे बनाए, ऑरिजिनल फ्लावर से उसने बनाया, और उनको किसी ने रिसर्च और उसको सजाया, and she was so beautiful. So let us see that this does not start in this university, we sell our own products. अच्छा
मैंने यार वो भी देखा मेरे पास सर मैंने लास्ट ईयर यात्रा में कश्मीर टू कन्याकुमारी यहाँ पे शाम को एक पत्ता मिला था मेरे को दिसंबर के महीने में, क्योंकि उस समय पत्ते नहीं मिल रहे थे, तो शाम को टाइम तो वो मैंने ऐसे टेस्ट करके रखा, मेरे रजिस्टर पे रखा हुआ, मैं नीदरलैंड भी गया था, सब जगह वही देखता हूँ, मैंने रखा हुआ। जब दो तीन ऐसे के साथ प्लीज आपको फॉलो करें। मैं Thank you very much. So now, may I request HOD sir, Professor, I can ask you sir to help our guests. To help our DSW to digital welfare, Professor Nilokumar. And also request our passport officer sir, Mr. Devendra Kumar ji to felicitate our guests, Dr. Shiva and Dr. Praveen ji, who are basically our guests in Kashmir, and they are very much इनकी जो एक्सपीरियंस है 20-25 साल की है, फिलहाल वो इनका आपको एक एक्सपीरियंस करने को मिलता है. So I am very thankful to you sir, to Devendra ji sir, to Balaji, to Shivaji, to Praveen, Dr. Praveen they are here because Dr. Praveen से बहुत पुरानी मुलाकात है, it's not new. So I am very thankful. और now I request our DSW to kindly facilitate our HOD sir, who is our basically heading the division and he is our mentor and mine. So I will request our Thank you very much. Please seat and I request Dr. Kajal to please kindly go for vote of thanks. After that, we have a lunch. हमारा वहाँ पे lunch है यहाँ पे ये lunch के बिलोबिला में we will go together. और participants को request है कि इसके बाद एक important session होने वाला है जिसमें हमारे HOD से डेलीब्रेट करेंगे. We have two panel discussions में दो लोग हैं, एक हमारे डॉक्टर शिव बालाजी है एंड देन प्रवीण साहब है, डॉक्टर प्रवीण है, वो आप उसमें वो होगा, वो टेक्निकल सेशन स्टार्ट हो जाएगी. इट वाज इनॉग्रल, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ आएंगे, उसके बाद हमारा वो स्टार्ट हो जाएगा जिसके लिए हम यहाँ पे बेसिकली आए हैं. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Masud sir. Our chief patron, who has already left because of some paucity of the time, and then patron as well, director search, they were having some important assignment and they have left. And Dr. Verma sir, director, Central Institute of Temperate Horticulture, he has started his career, as I know, because I was that time a student from this SITH only. He qualified ARS exam and we were inspired by his qualifying that exam, and we also tried that time, though we couldn't make it, and we made it to this university. Then passport officer, chief passport officer of our state, Devinder sir, Balaji sir, Parveen Singhi sir, then Prajapati, cycleman of India, and Dean Students Welfare Officer, Professor Nilofer, our head department, organizers, co-organizers, co-patrons, and our participants. Very good afternoon. I have been given the opportunity or the responsibility of proposing the vote of thanks, which is very important task actually. Basically, it is said in our scriptures as well, that holy scriptures, that thanking people is akin to thanking God. So that way it is an important task. And though our worthy, this Honorable Vice Chancellor is not here, but we are highly thankful for his accepting our invitation, for sharing his thoughts over here, and he has propelled what he has said in his discourse as well, that for past 3 years, this floriculture division has transformed.
And that is, to be honest, that is because of his personal guidance, mentorship, and his energetic efforts. He has his contributions to this university or the state or bringing of this NEP. That is tremendous. That is uncountable. We can't count the way he has been instrumental in giving these things, those ideas, and all those things. So we thank him, though he's not here. Then the chief patron, the patron of this program, Dr. Harun Naik, who is our director research and director planning as well of SCOS. He is instrumental in getting all these programs that you have seen. This MSME programs last year, आपको ये अंदाज़ा नहीं हो सकता है कि हम लोग ये सारे प्रोग्राम नहीं कर पाते। ये उनके पर्सनल एफर्ट्स हैं, उनकी अपनी जितनी इसमें मेहनत लगी है वो तो यही जान सकते हैं, लेकिन हमारा ये फरीज़ा है कि हम इसको एक बिग ग्रेटिट्यूड दें, एक बहुत बड़ा थैंक यू दें। थैंक यू वेरी मच सर फॉर एट लीस्ट टू कंडक्ट, वी आर एबल टू कंडक्ट सच प्रोग्राम्स। आपको हर दिन यहाँ पे देखा गया है कि हर दिन कोई ना कोई प्रोग्राम ऐसा होता है। 500 प्रोग्राम जो IITs में होते हैं वो आज की डेट में बिकॉज ऑफ दिस मैन we are being able to conduct over here. We are very thankful to you, sir. Then we are thankful to Director SIT, M.K. Verma, sir, for accepting this invitation and for sparing some valuable time over here. At a very short notice, he accepted because it is his love and his, I think, passion for the horticulture that he has come up over here. Thank you very much for coming. We are equally thankful to passport officer, as you already know, कि वो थोड़ा सा इस फील्ड के साथ रिलेटेड है, तो उसने काफ़ी एंथुसियाज्म दिखाया and he came up over here with the really actually the intervention of Masoodi साहब, तो उसको पहले से जानते हैं, but still he spared some time and came because we had already invited so many people as well, but most of the people, they were not able to come because of their own engagements. But it is really hats off to Devendra sir that he accepted this invitation and made it up over here. Thank you very much, sir. And we are really thankful to Devaji, this Bala Shiv sir. He has given us a brief overview of this, right? A good insight of the program, of the activities which are going on in the floriculture. And hopefully he'll be with us for a few days as well. And he'll be giving us more insights about these things. And besides that, we are thankful to Parveen Singh sir for coming up straightway from Delhi to here to teach us or to share us the knowledge of this soilless culture and hydroponics. So we are thankful to you for coming up at a very short notice. Thank you very much, sir. We are thankful to our Dean's Students Welfare Officer, Professor Neelufar Sahiba. She is always, जिसको हम कहेंगे ना, post of pillar, हमारे पीछे हमेशा खड़ी रही है. She is the professor in the division of floriculture actually, and she is nowadays holding the charge of this Dean's Students Welfare Officer. And इसी की दुआओं की वजह से शायद हमें लगता है कि हम छोटे छोटे लोग ये सब प्रोग्राम कर पाते हैं. And we are thankful to our head, Professor and head, Dr. Nazki साहब, जो कभी भी किसी भी काम में कोई अड़चन नहीं डालते, तो करने की कोशिश में लगे रहते हैं. किसी को कभी ऐसे जैसे लोगों का रहता है, अगर बुरा भी लगता है तो मन ही मन में रखते हैं, लेकिन फेस पे नहीं लाते. We are thankful to you, sir, that you have just come up over here and you have graced this occasion and you have really made this a wonderful learning experience. Last but not least, जो हमारे participants हैं, उनके बगैर हमारा ये एफर्ट्स बिल्कुल ज़ाया है. अगर ये लोग नहीं हैं तो हमारे ये करने का कोई मतलब नहीं है. तो हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे आके अपना कीमती वक्त निकाला. हो सकता है, बोलते हैं कि वर्ड्स है पावर, जो अल्फाज होते हैं इनमें काफ़ी शिद्दत की ताकत होती है. हो सकता है कुछ अल्फाज ऐसे हों
जिनकी वजह से कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे डेवलप हो जाएं कि हमारा भी वही एक मकसद है कि थोड़े से कुछ अगर 4 5 या 10 ही एंटरप्रेन्योर्स आगे आ जाए तो थोड़ा सा हमारा ये फ्लोरिकल्चर आगे ले जाए. We are very thankful to you that you have come and you have spared your time, and hopefully you will definitely have something to carry with you. And last but not least, I think I've missed so many names. There is press and media, then the people in the hall committee, and then this catering committees. So if I'm not able to name all those things, it is because of the paucity of time. I'm thankful to one and all for making this inaugural session a successful session. Thank you very much. Thank you. Now, I request everybody, सबसे जो participants हमारे on behalf of our institution, I would like जो ये training है, आपको ये यहाँ पे वो नहीं बताया जाएगा बल्ब लगाना वाला चीज, वो तो बताएंगे आपको हमारे टेक्निक मोड पे. आपको दो चीजें होंगी जो हमारे साथ बैठेंगे लोग, they are policy makers, ये policy बनाएंगे. ये हमें हेल्प करेंगे आपका जो यूनिट है उसको एस्टेब्लिश कैसे किया जाए. वाला डॉक्टर शिव सर, आई विल रिक्वेस्ट यू सर, इनके यूनिट कैसे एस्टेब्लिश हो जाए, वो हमारा है. फंडिंग मैकेनिज्म क्या है, जिससे आप फंडिंग कैसे कर सकते हैं अवेल, वो आप सब काम करते हैं. उसके लिए आपको रेगुलर आना पड़ेगा, ये ट्रेनिंग रेगुलर लेंगे. थैंक यू वेरी मच सर. तो नाउ हमें on behalf of our HOD sir, I will request all to come to the Villa and have a lunch there.